Okay. First question. Suggest two causes for lack of sharpness on X-ray image. Larger window. If window is larger, then there will be multiple shadows, lack of sharpness, and no filter used, so non-parallel beam also reach the photographic film. So when non-parallel beams will also be reaching the photographic film, X-rays will not be 100% sharp. अच्छा जी देखिए, the thickness of a metal sheet is examined using parallel beams of X-ray as illustrated. Parallel beams of X-ray. The part normally through the metal thickness of 3.2 millimeter. Another part through metal is X millimeter. So this one is X, and we can clearly see from the diagram, X is less than 3.2. The linear attenuation absorption coefficient of this is 1.5 per centimeter. The intensity X-ray beam transmitted 3.2 millimeter of the metal divided by intensity of X-ray transmitted through X millimeter of metal is found to be 0.81. Calculate the thickness of X. You know, if I intensity is coming from here, like I naught, then it will be I1 here and I2 over here. I1 will be equal to I naught E minus mu X, or I2 will be, sorry, instead of X, we can use 3.2. Attenuation is 1.5. So 1.5 and X is, one more thing, attenuation is given in centimeters per centimeters. So we have to convert this also to centimeter, it becomes 0.32 centimeter. Now I2 will be I naught E 1.5 X. So he's basically asking for the ratio between these two. E power does anybody have calculator? What is 1.5 multiplied by 0.32? Oh, it is 0.48. Good, got it. Minus I naught minus 0.48. सर ये divided by, 0.32 सर ये 0.32 क्या है सर? मैं बताता हूँ, देखो ये इसकी थिकनेस है, यूं ये वाला फॉर्मूला याद है, I इक्वल्स टू I नॉट जी सर. माइनस म्यू एक्स. जी सर. माइनस म्यू इज एक्चुअली द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और एक्स जो है ना वो डिस्टेंस है जो एक्सरे ट्रेवल करती है किसी मीडियम में. ओके सर. ठीक है, सही है. तो ये इस तरह से हमने किया. अच्छा, अब ये इसका आंसर उसने बताया कि दिस इज इक्वल टू 0.81. आई नॉट सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ई पावर 0.48
equals to 0.81 times e power 1.5x. Or one more thing that you can do over here, when bases are same and things are divided, you can subtract the powers. So e power minus 0.48 minus 1.5 x equals to 0.81. By taking log on both sides, 0.48 plus 1.5x equals to ln of 0.81. So x will be equal to ln of 0.81 minus plus 0.48 whole divided by 1.5. Okay, can anybody use calculator and find this thing out? जब मैं ही कैलकुलेटर लाऊं यार मैं है मेरे पास है 1795. सॉरी 0.1795. zero 0.18 millimeter. Oh, sorry, centimeter. I know Millimeter will be 1.8 millimeter. Now, next part. The ratio of the intensities is also the ratio of the power of X-ray beam. Calculate the ratio in decibels. Okay, we still have to do this thing. ये बाद में करेंगे हम attenuation अभी हमने नहीं की हुई है. Let's move on. Okay, describe the basic principle of CT scan. X-ray, gun, and receiver moves around patient for multiple scans. Region of human body is divided in thin slices. Each slice is divided into small cubes known as voxels. Pixel of each voxel is measured multiple times computer generates values for each voxel
by combining together computer makes images of each slice by combining together all slices. Computer produces a 3D image of investigated region of human body. Okay. Do you think everything makes sense? Yes, sir. Okay. Next question can be this one. CT scan was not possible before the computer with large memories were available. Why it was not possible? क्योंकि वो वॉक्सल्स नहीं हो, मतलब वो स्टोर नहीं होते थे. Too much ज्यादा होता है. information requires very large virtual space. The radiation does for CT scan is much larger than an X-ray image of a leg bone. Radiation dose radiation dose for CT scan is much larger than X-ray image. For one CT scan, many X-rays are done multiple times to produce (3D) image for doctors' investigation. Okay. So why a CT scan gives you more X-rays? Because obviously you're not doing just one X-ray. For CT scan you do multiple X-rays. हम एक दफा X-ray एक तरफ से करते हैं, फिर दूसरी तरफ से करते हैं, फिर तीसरी तरफ से करते हैं, फिर चौथी तरफ से करते हैं. तो इसका मतलब है the exposure of the human body to X-ray is enlarged. Now, okay, this is already done. But look over here. ये important है. ये जो ऊपर क्वेश्चन था सर, मैं करवा रहा हूँ. ये एक ही रह गया ना, बाकी तो सारे हो गए ना. जी सर. नहीं सर, अच्छा, इसमें देखो. बस ये चैप्टर में सर बस यही क्वेश्चंस होंगे ना सर, कुछ डिफरेंट तो और नहीं हाँ. आएंगे ना सर? नहीं, इसमें कोई ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती. ये देखो, ये करो जरा क्वेश्चन, ये तो कर लेना चाहिए था तुम्हें. ये पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को. Yes, a student creates a more of a CT scan section into four pixel LCD and channel film that's the video share is the video is noted and then some. So 47
39, 44, 32। हाँ तो सर थोड़ा सा नीचे करें। यहीं पे करना, तुमने वहां से पढ़ो ना, अपने जो तुम्हें तस्वीर दी हुई है। ओके सर, ओके। यार ये तो हो जाना चाहिए था अभी तक। डन। यार इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं है, तुम्हें ये पता भी है कि अगर ये सारे स्कैन करके एंड पे आया है और बैकग्राउंड रेडिएशन भी आपको बताई हुई है उसने, बैकग्राउंड काउंट भी बताया हुआ है उसने आपको, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल होना चाहिए। सर एक सेकंड सर, बस माइनस करना है, इसको डिवाइड बाय 3 करना है बस। सर ए का 7 है, सही है। ए का 7 है सर, ए का 7 है। सारे बताओ मुझे पहले। सही है, मैं बताता हूँ। सर बी का 11 है, 7 11 44 -26। सर और डी का 6 है। और सी का डी है, सी का 2 है। सी का 2 है, सही है सर। सर सी का 2 है, 2 या। पहले बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस की जी सर, बस किया। तो वो ये आ गया, और फिर आपने डिवाइडेड बाय 3 किया तो 7 11 6। सही है सर। ठीक है, पूरा काम तो नहीं, एग्जामिनर आपको कल देखा था ना, काफी लंबा चौड़ा काम होता है, तो पूरा अगर करेंगे ना तो वो बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर, और एग्जामिनर को आपको हो सकता है 50-60 नंबर देने पड़ जाएंगे एक ही सवाल के। ठीक है, तो उसने सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन करने के लिए कही है।
सर ये डिवाइडेड बाय 3 क्यों की है? तुमने ये क्लास ली थी मेरे साथ? कौन सी सर? सिटी स्कैन वाली। सर ये वॉक्सल वाली तो ली थी लेकिन समझ ये नहीं आ रही सर। ये पढ़ो ना। नहीं तो तुमने क्लास ली थी ये वाली जिसमें वॉक्सल वगैरह हमने समझे थे कि क्या होते हैं? जी सर। तो पहले हम लोग सारी रीडिंग्स ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि बैकग्राउंड रीडिंग माइनस करते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें उसका हर चीज को 3 से डिवाइड कर देते हैं। सर क्यों डिवाइड करते हैं? देखो ना, इधर देखो, हमने किसी एक चीज को कितनी दफा ऐड किया होता है हमने हमने ना 4 स्कैन लिए ना, 4, 1 2 3 4। ये देखो अभी जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें भी ये कितने स्कैन है इसमें, देखो ना। ये वाला जो स्कैन है ये बैकग्राउंड है। तो इसका मतलब है हमने ये जो 1 2 और 3 स्कैन हैं, इसका मतलब हमने कितनी रीडिंग्स ऐड कर ली हैं उसके अंदर, 3 दफा रीडिंग्स ऐड कर ली हैं। तो रीडिंग 3 फोल्ड ओवरलैप हुई हुई है। ठीक है, ये बैकग्राउंड रेडिएशन कैसे डिसाइड करते हैं ये? ये देखो इनिशियल एफ एक्वायर्ड कर। जो पहली दफा की टोटल रीडिंग होती है ना उसको बैकग्राउंड रीडिंग कहते हैं, लेकिन इसमें उसने बताया हुआ है आपको। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाओ ये why continuous distribution of wavelength. High speed electrons are stopped by metal target. Not all electrons get same acceleration. So range of acceleration means photons produced will also have range of frequency as well as of wavelength. So there will be always a range of frequency produced and range of wavelength produced. Why do we see these cutoffs? ये सर इसमें कुछ फोटॉन्स है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो Some अचानक एक्सीलरेट electrons, बिल्कुल सही बात है, some electrons give all their energy to photons. These photons cause these cutoffs.
Okay. The X-ray imaging of the body structure, longer wavelength photons and frequency filtered out. Longer wavelength means less frequency, so less energy. Hence, less penetration ability. This is why less energy. This is why these photons should be removed so they can't get absorbed by human body. So what we do is we minus these photons with very small frequency or very large wavelength, because they cannot penetrate and they are more likely to be stuck in the human body and cause damages. So that's why we I have suggested the reason of just 1 second. Now, how do we achieve this filtration? सर कॉलीमेटर है, क्या नाम उसको, वो लगाते हैं? नहीं, कॉलीमीटर तो सीधा करने के लिए होता है ना. तो ये क्या बात हो रही है? सिंपल एक मेटल शीट रख दो, थिन मेटल शीट. प्लेस है थिन मेटल ये शीट. ऊपर कौन सा क्वेश्चन है? सीरीज ऑफ पीक्स सुपरइम्पोज ऑन द continuous distribution of wavelengths. मैं बताता हूँ. We plus we place a thin metal sheet, so low energy photons Are absorbed. absorbed. दोनों जो लो एनर्जी फोटॉन्स होंगे वो वहां से पास ही नहीं कर सकेंगे. मुझे बताएं, फोटोन की अब्जॉर्प्शन या पेनिट्रेशन एबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की चीज होती है भाई. फ्रीक्वेंसी फोटोन की absorb. Sir, electrons are सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट करना. पेनिट्रेशन ऑफ फोटोन किस चीज पे डिपेंड करती है? electron spin. स्पीड या फ्रीक्वेंसी? क्या एनर्जी है? शाबाश, तीनों चीजें हैं. देखो, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी. अब किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या कम हो?
ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सर ज्यादा हो उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है। शाबाश, देखो एनर्जी इज इक्वल टू HF, याद है ना, एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी जी सर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम। जी सर। अच्छा जी, a series of peak superimposed on the continuous distribution of wavelength. Like, why it is superimposed over here? Where sir? On here. डी एक्साइटेड, यानी डी एक्साइटेड किसको कहते हैं? एनर्जी ना हो। जी नहीं, सर। जो एनर्जी रिलीज करें। रिलीज करें। आर पर। सर ये आप हमें PDF भी कर दे, सही है सर? ये मैं सेंड कर रहा हूँ। हाँ, ताकि हम फिर रट्टा हमारे सर। बेटा ढूंढ के कुछ और क्वेश्चंस भी कर लो इसके ना। सही, आपके पास है सर और क्वेश्चंस कि नहीं? मुझे मुझे याद करा देना, मैं तुम्हें ढूंढ के भेज दूंगा। वैसे तुम्हारे पास सही है टॉपिकल नहीं है कोई? सर। मेरे पास है, पास पेपर्स है लास्ट 3 इयर्स के। नहीं नहीं, वो तो है ना, वो तो पूरे ईयरली पेपर होंगे ना, इस तरह टॉपिक वाइज नहीं बने हुए। नहीं, टॉपिकल्स नहीं है सर। सर आपने कहा कि ईयर वाइज करेंगे, तो इसलिए मैं टॉपिकल्स लिए ही नहीं। चलो मैं तुम्हें करा दूँ। सही है। मैं तुम्हें ये ले। अच्छा, फिर कल अल्ट्रासाउंड कल ही शुरू करेंगे, आज तो नहीं हो सकता, ठीक है? जी सर। ठीक है। ओके सर। चलो फिर कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ सर।